which is a practice management and development committee we have formed for the first time in this year. So before starting the activity, I'll just brief about upcoming events of the association. We are having track on 10th. Uh, we already have more than 40 participants for the track. There are 2-3 seats left. If somebody wants to join, they can connect to Grishma. Our members are also participating in GST RRC, which is organized in Lonavala on 24th and 25th of this month. So if anybody wants to join for GST RRC also, they can connect to Viral Satra. Today we will be maybe rolling out one form by this committee itself for practice management and development. There are certain information or key ingredients asked in the form. So once those information is captured, we may plan further activities in under this committee. Also, you can connect to any of the committee members, maybe Nihar also, or any of the office bearer also, that what all activity we can plan for practice management and development. Uh, Apart from this, there is one study circle organized by Dadari CP Study Circle. Members are also encouraged to participate in that study circle. The dates are around 27th of August. It is upon NFRA. So whoever is willing to join can join the otherist for that particular program. With this, I will just now ask Chairman of the committee, Manoj Pai, to take over charge from here, and then we will start with our sessions. Thank you. Uh, Thank you, President, and welcome all the participants to this wonderful event organized by Practice Development and Management Committee. I'm really enticed, with the topic itself, which is technology, the new age human capital. Uh, I think about 200 years ago or somewhere, one would have thought, one could have never thought that an artificial person like a company, could be a person which can be text. Just imagine the era of 1600 and 1700 where only no such concept was there, but then entity came into being and became a taxable entity and person, which is non-living person. Similar is the case today that technology is now entering our life and it has become integral part of it, and it is like behaving like another human, though non-living. So in this type of arena where everybody is in and day out has been glued to technology, and it is indispensable. You cannot live without it. Be it everything in today's environment has turned to be tech. It is agri-tech, it is fintech, it is biotech, and so forth and so on, and it is even fintech. Probably taxation or compliance or audit may not get fully tech driven, but because human intervention and human intelligence will prevail, but still the big role which everybody sees and already started experiencing is the technology. And with this intention, the association thought that let's have a program which develops and or rather induces members to get into newer technology so that process improvement can be undertaken at various our own office, and also we can be more competitive. So technology is a two-edged sword. It is either an enabler or even a disruptor also. So we have to see that we are able to, it enables us and we enable technology to help us in our practice and day-to-day management, even for growth. Because generative artificial intelligence, if it can do wonders, if we try to feed them with right data and what kind of data analysis probably our team or human intervention can do, the technology can do much faster. So these are the broad background and in the idea that this president thought of forming this committee. And I'm really appreciating the committee's effort in coming out with this first event. And the more fascinating is the spread of speakers or the profile of speakers. There are speakers who are young, there are speakers who are very, very young, there are speakers from Gen Z, and I'm really happy that this young team of speakers are leading today's discussion. We are going to have discussion on WhatsApp. Let it not be just a social media tool, but let it be a professional tool. I think Vipra is going to take the subject. Then we have got Excel, Power Query, and other things. How it can help us in better data management and swiftly managing data, and even software suite, which is going to be led by Ankur Sangvi. And then we have audit software,
which is Black Horse, which is by Parin Gala. So without taking much time, I request Bhavya to start with the introduction of the speaker and then the program per se. Thank you so much, and all the best. Wishing you a very happy learning. Thank you. Thank you, Manoj bhai. Thank you so much, sir. Good evening, everyone. Firstly, we thank you everyone for sharing this overwhelming response and joining this first session of CVOCA's Practice Management and Development Committee session on technology, the newest human capital. Today, I'm glad to have this opportunity to introduce all the distinguished speakers on the panel, having expert knowledge in the subject matter. To start with, Mr. Karan Shah, he qualified as a chartered accountant in the year 2017. After completing his articleship at the firm Jignesh Dedia and Company, he joined as a director of Shan Plus Lifestyle Private Limited, which is basically a family business specializing in manufacturing of home textiles. As a business owner of a manufacturing company, he leverages AI and Microsoft Power Tools to automate accounting, auditing, taxation, manufacturing, and other operations of the company. This helps him to streamline the processes, reducing errors, and gaining real time insights for informed decision making and overall growth. This speaker will share lots of details how things are done, how he uses AI and Microsoft Power Tools, which will help all the audience to incorporate the same in their own practices or the company. Now, I request our committee chairman, Mr. Manoj Shah, to felicitate Mr. Karan Shah by giving an e-moment. Yeah. Thank you, Manoj bhai, and thank you, Bhavya. Thank you. Thank you so much. Moving on to our next speaker, Mr. Parin Gala. He qualified as a chartered accountant in year 2013 and currently is a partner for audit and assurance at the firm Ankit Parin and Associates. He has an experience in stat audit and tax audit for more than 9 years now. He has successfully implemented NDS and IFRS in lots of lines. He has been using Black Horse utility for preparation of financial statements for multiple corporates and non-corporate SME clients. And since last 2 years, this has helped him to reduce the non-productive hours of formatting, sequencing, schedules, notes, and other finalizing of balance sheet. The speaker will help us to understand how to use Black Horse utility, what it exactly is, and how can we incorporate as a firm or as a company in our own day-to-day operations and the financial workings. I hereby request Mr. Kiran Dedia to felicitate Mr. Paringala by giving an e-memento. I think Pareen will be joining in a while. Uh, Noted. Moving on to the next speaker, we have Mr. Ankur Sangoi, who qualified as a chartered accountant in the year 2015. He is currently a proprietor of Ankur Sangoi and Associates and have been practicing over 9 years and has experience in the field of income tax, GST, and RERA compliance. Throughout his career, Mr. Sangoi has been handling more than 400 clients utilizing advanced tools like Microsoft Power Query, Office 365, and Power Automate. His approach aims to streamline operations and shift towards more analytical responsibilities, enhancing efficiency and effectiveness of financial management using all these e-tools. I hereby request our president, Mr. Vineet Gala, to felicitate Mr. Ankur Sangoi by giving an e-memento. Welcome, Ankur. Thanks for accepting our invite to take this particular topic. Thank you. Thank you to the association to giving the opportunity to us to present in behalf in front of our members. Thank you for the initial opportunity. Moving on to the next speaker, Ms. Vipra Sayya. Vipra qualified as a chartered accountant in the year 2024. She has experience in auditing various industries, including NBFC, construction, and healthcare.
She also has managed audit of large infrastructure projects and has experience in direct tax and indirect tax as well. She has made various models of Excel to ease checking of various audit clauses and implemented the same using audit tool inflow. She also has a proficient knowledge and has been using Power BI in her auditing and taxation practices. I request Mr. Harsh Dedia to felicitate Ms. Viprasaya by giving an e-memento. Thank you. Thank you. You see the screen or? So thank you, Bhavya. Without much ado, I would now hand over the proceedings of the session to our tech guy, techie Karan Shah. So Karan, over to you. Thank you, Nearby. Hello, everyone. As part of this practice development committee, I'm excited to kick off this tech help seminar. Primary goal of this committee is to assist each other towards tech inclusion in your CA practice. Uh, we conducted a small survey within colleagues and some friends, and we figured out some challenges for our first session. Today's session is a direct result of that survey. We have tried to address some of the more common issues that we can address and help each other. So without further ado, let's start with the first uh, session, which is bulk WhatsApp messaging. Communication has always been an important tool for a CA practice. Effective communication can lead to good success. So traditionally, we have relied a lot on emails. However, we have seen that recently, even corporates are moving towards WhatsApp for some informal communication with CAs and vice versa. When you check softwares, not all softwares are as integrated with WhatsApp as they were with emails. So we have to figure out some ways where we can send personalized bulk messages so that we can have effective communication with our clients. So to address this issue, we found out a simple Excel template from YouTube after searching from YouTube, which can help us sending bulk and personalized WhatsApp messages to our clients. The practical applications of this tool are numerous, but to list out some, you can use it to send outstandings to your clients. Uh, let's say you have a list of clients and you have a list of requirements against. You can even use this template to send individual requirements to each client automatically. You can send reminders to your clients regarding due dates. You can send updates about tax, notification about tax. So like this, there are many such use cases where you can use WhatsApp. The important thing about this tool will be that you have to prepare your data in a specific format. The set format will include the number of the client, the text message that you want to send, or the location of the file that you want to send. And the number has to be saved in your contact list, not in the person that you are sending to, but in your contact list. With this, I will hand over this session to Vipra. She will take us over to how to install this tool and use the tool. Over to you, Vipra. Thank you, Karan bhai. So, as Karan bhai explained, it's not a big procedure which we have to do. It's a really small procedure which all of us have to follow, and we'll be through to using WhatsApp bulk as soon as possible. So, there are three basic steps, like I said. So first we have to download the bot Excel, set up in our computer. So setup includes two additional steps and data streamlining. Coming to uses, as Karan bhai mentioned, we can use WhatsApp bot in different ways. We can send document requests to the client.
let's say there's a set of requirement every month you have. Okay, for a GST return, you need purchase register, sales register, and maybe their bank entries. So these requirements, you can make a common list for all your GST clients. You can send them data reminder. If you have a set of data which is already there in your tracker, you can combine it with Excel formulas and send them updates on recent changes in law, filing status. Let's say if some clients some GST return is pending and you have a tracker which is on set, you can send them data follow-ups also like that, and feedback as well. So moving on to how this will work, first we'll have to download the Excel tool. So this Excel tool, a person has made it for free. Only thing which you guys have to keep in mind is that your data is in the set format and the contact to whom you're sending the message is saved, because if the contact is not saved in your PC, it will show an error. We'll do that when we see the demo which I'm going to show you. So how do we install this? So the website, if you can see this website, you guys will be going to, then you can download the Excel. Once the Excel is downloaded, then you have to do those additional steps which you have to download two, three other things. First is Selenium Basic. So this link which you guys can see, from this link, you have to download Selenium Basic 2.0 9.0 XE. Once this is downloaded, we'll have to install this. So install these steps are very basic, how we are installing any other software in our day-to-day life. Only thing which we have to remember is once this is installed, the step before installation, here this path we have to copy. Now why we have to copy this path is we have to replace the Chrome driver as per the modifications which our Chrome browser is using. Now, how do we come to know which version of Chrome browser are we using? You go to Google, there are those three dots. There we'll have to go in help and we'll have to find out about Google Chrome. Next, we'll go to this web page of settings where we'll be able to see my Chrome version. Let's say the PC I am using has the Chrome version of 127.0.6533.89. Now this Chrome driver we'll have to download from a specific link. So this is a Google Chrome Labs link from where we have to download the Chrome driver. In that we'll have to choose stable and our binary will be Chrome driver. Now binary can change as per your web browser which you're using, and the specific Chrome driver which you have to download will depend on your Windows version as well. So why did we check the version of Chrome? Because now here finding that can also get difficult, and how will we at ease be able to understand? If you guys can see at the end after Chrome for testing public, we can see the version. So you might be confused that my version was 8.9 and 8.8. So 8.9 and 8.8 may the Chrome driver will work perfectly. So you guys need not worry about that. Once you've downloaded this Chrome driver, so I think I've tested around 3-4 PCs and maximum PCs has this Chrome driver of Windows 64 storage, and you can see the link. We'll share you the link as well going forward. Now, replacing the Chrome driver. When you download your WinZip file of the Chrome driver, something like this will open when you double click your WinZip file. You have to copy this Chrome driver and replace it in your Selenium folder. So that's why when we were installing Selenium, I had told you guys to copy the Selenium path. Once this file is replaced, you have to do one basic thing in your Excel which you had downloaded. So because you are using an automation tool, you have to unblock the Excel so that it can function properly in your PC. For that, you have to do right click and then you have to go to properties of that Excel. And if you can see here is the security tab, you have to unblock the Excel, which will ensure your WhatsApp bot works efficiently. Next will be, there's generally in your PC, this might be
enabled or not enabled, there's a .NET Framework 3.5 which you have to enable. Now, how do we enable this feature? To ensure that our automation works, you have to go to Start, Search, Turn, and turn Windows feature on or off. Next step will be you have to ensure that the first thing, which is .NET Framework 3.5, includes 2.0 and 3.0 is ticked. If it is selected, then you're good to go. If it isn't, then you'll have to download the files of that .NET Framework. So once you do OK, this window will pop up, which will ask you that you have to download or no changes will be made to your PC. So you have to download these files and then you'll have to install it. The next step will be OK only. After this is done, you'll have to restart your PC and then you can use WhatsApp bot perfectly. Yes, there's one more step. Once you open the Excel, there'll be macros enabling. So it will ask you enable content for macros. You have to enable content so that the macros work properly and you can send WhatsApp bot messages faster and easier. So there are a few things which you have to keep in mind. How Karan bhai mentioned, the text should be in a particular format. The text has to be like this, how it is mentioned. You have to, so there are these options which you can use. Image has to be the full path of image if you're attaching any media, and even a document you have to ensure that you are attaching. So generally, how can you ensure that you are putting the proper document path? You have to do shift and then right click, and then you'll get the path properly, which you have to copy paste. Ensure that in this you do double inverted commas and paste the path. One more thing is, let's say when you download the WhatsApp bot Excel, this is given as the basic rules. Don't delete any rows, like how we generally do shift space and we delete all the rows. Don't delete the rows, only select that much data and delete, because there are codes in that Excel. If you delete those rows, you will not be able to use the WhatsApp bot perfectly. Going forward, now this for media and document, it is really easy. You put the phone number of your client, attach the image ka path, and then you select media or document. If it is a media, you can add caption as well. If you want to do a line break, you have to use this cursor. If you can see this, it's a straight line. So generally on my laptop, it is shift and then there's a key above enter, which you have to use. For bold inverted commas like we use in WhatsApp, and italics and strike through, italics underscore strike through, the wave key. I feel I have to call it the wave key. So moving forward, so this is the format. You can use any of this and you'll be good to go in a WhatsApp bot. Now, once you have ensured that your data is streamlined, like phone number, text, and the type of media you're sending, one easy thing you have to do, you have to click on run WhatsApp run WhatsApp bot. You will go to Google Chrome will open automatically. You have to scan your WhatsApp bot and then you have to do OK. So I'll show you going forward how that works. I think we can do the demo now. So I have prepared my basic Excel here, like I told you guys. Here I've put underscore, here I've put the wave for strike through, bold. Here we've put a line for that enter, and I've put an image, and this is my document which I am going to send. So I've put my only phone number for sending emails, and this I've put, so like I mentioned earlier, the contact which you are sending a message to has to be saved in your PC. If it is not saved in your PC, then it will show an error, because this is a free tool which we are using. We can send messages to unknown numbers which are not saved on our PC through the paid version of this. So I've entered all of these details here and I've added caption also here. In caption also, if you guys want to see, we can put this, and we can even put in stars, and we can do bold. So in caption also there is this functionality which we can work. Let's say you want to send an image and then you want to invite people for your opening of your office, or let's say you've prepared a ledger
suspense account, you've taken a picture of that, you want to send client a detailed list, okay, these all things are pending from there, and you can do that as well. So now what we'll do, we'll click on run WhatsApp bot. Now I've scanned my WhatsApp here, so it will open automatically. So if you guys follow these basic steps like I mentioned, it will hardly take 15-20 minutes for you to set up WhatsApp bot and then restart your PC if there's that .NET framework error which you'll find, and you'll be good to go. So now my WhatsApp has started. I'll go here and I'll press on OK because जो it कि आपको says मिलता है टैली के रिलीज 6.6 से अबव पे, एक काफी यूजफुल फीचर जिसके थ्रू आप अपने टैली की मेजर रिपोर्ट्स कभी भी and we'll go to WhatsApp. If you can see, it is searching my number, then it is clicking, then it is sending. So I've put the whole text in inverted commas or anything. You can ensure as you want. You can customize your text as you want. We can even extract our data from Tally and create a message of your outstanding like Karan Bhai mentioned. So let's say there's an outstanding or a suspense of a client. I mentioned a picture. We can put that into an Excel also and get it done from our client. So rather than taking the effort of picture, I think that will be much easier. Now, if you see in this demo, I've put image. Now WhatsApp bot will put caption also in this. I think the last part about PPT is there. That is 1 second. Check. It is working. So sometimes there could be some time it will take, but the WhatsApp bot will work. Yeah, I think we're done. And I think last number, it will be pending, which it has to search, which I've put a wrong number. So it will show contact not found as the error. I think I've put something. Yeah, I've put that demo of this I had put. Let's say we are sending a document to the client. So we can do in one line the document being sent, because in document you cannot add caption. Then we can send a text again. So if you see in the last, I had not put the contact. I have not saved this contact on my phone. And here it shows me the error, no contact found. Rest all messages are sent. You can get a status report of your message sent also. You can get in how much time your message was sent, and default time is 4 seconds. So I think this is a very efficient tool for all of us to use, because it will ease our day-to-day follow-ups with our client, our updates. Updates nowadays has become very important for all of us to keep our clients updated with recent amendments, recent changes in laws which come, and we can ensure that our clients and our day-to-day conversations also become much easier. So in conclusion, if I say there are 3 or 4 basic steps, you enable the Excel tool, download Selenium, update your Chrome driver in Selenium. And if you're facing that error of runtime error, that is the .NET framework, you have to enable that also. If anyone has some questions, I think we'll be taking questions at the end, but you guys can note them down. We'll do likewise. Vipra, I think there are 1 or 2 very quick questions. Maybe we can address them. So Sure, Nihar. So one question is from Moni. She says, can the messages be scheduled to be put up at a later point in time? I'll take up this. Since there is some manual intervention needed,
You cannot schedule it, but if you can mix this with a tool like Power Automate or something like that, maybe you can schedule it, but not directly. Okay. Next question is from Deep. Do any of these steps change if you're using WhatsApp desktop app instead of WhatsApp web app? So the automation tool will by default use WhatsApp web version only, Chrome only, because it has both Chrome in its coding, not WhatsApp desktop version. So it will open up Chrome, you will have to scan your code to enable, and then it will send via that. Okay. One question is from Vinith. Do the contacts need to be saved in the phone itself, or is there any requirement to save it in the PC? No, you only have to save it in your mobile. It will use the mobile contact list. Okay. And one question from Chintan. If we send multiple messages, can the WhatsApp block my number? The WhatsApp will not by default block your number. However, if you are giving out too many messages and people report you, then it may block you. But it is different. It is just mimicking human steps. This is bot is only mimicking human step. It is not a API tool, which many paid tools offer. Okay. I think just last two questions that we take up. One is from Sanyam, which says, can messages be shared in the groups, or can it only be sent to contacts? Only in contacts. Okay. And one question from Ketan Gada, today's Zoom meeting. So Ketan bhai, this message has been sent through a paid application, which Vipra was saying. So I think that question I have already answered right now. And one last, I think, does this work with business account? Any Yes, idea? it worked with business accounts. Great. So I think we've tried to answer all of them, and maybe I think we can move forward now. Yeah, a few things to note here are that when you are Vipra has shown how you can send the messages, but uh, preparing the messages is a different challenge altogether. If you are comfortable with Excel formulas, you can use if and cell references to make a personalized message. If you are comfortable with Power Query, you can leverage that and make some personalized messages. Uh, okay, thank you. So now we can move forward to the second session, that is PDF to Excel conversion. I will thank Vipra for the demo. Thank you, Karan bhai. Since the July season has just been over, I will try to reenact a client who has come just a day before the due date, has a 50-page bank statement which he has procured in PDF format, and he wants to file a return. Now, at that time on 30th of July, it will be very difficult for you to process that document, and you will probably say no to him, or you will have 3 to 4 articles engaged in that operation. But what if we can convert that PDF document to Excel within few minutes or even seconds? So keeping that in mind, and not just bank statements, but let's say capital gain loss statements or any document which has been procured in PDF and now we want to convert it in Excel format. Because most of our calculations and our analysis will have to be done in Excel and cannot be done in PDF. So to do that, we have a couple of options. So first one is leveraging what you already have. Most of us are CAs here and will be using Excel in our offices. So Power Query in the later versions of Excel is already installed along with Excel. It is part of your Excel Power Query, and it can directly take the PDF and export it into Excel. You just have to mention a few steps in it. The demo of how to do that will be taken up by Ankur. However, where sometimes some bank statements of some banks are very complex and Power Query will not be able to do it simply. Either you will have to know Power Query very efficiently, or you may not be able to convert that PDFs. So in that case, we have to leverage some proper software for that job. So when it comes to bank statement, we have identified a software named Suvit. What Suvet does is Suvet takes bank statements in PDF, Excel, CSV, scan, and it directly converts them into a proper table format. You can export it into Excel as well as directly export it into your Tally for entry. Okay. Some practical considerations that you have to take care is, since Power Query is free, you may have to put in your efforts. However, Suvet is not free. You will just have to give it money
and all the efforts will be taken care by the software team. Okay, with this, I will hand it over to Ankur. He will take up the demo of how to convert your PDF bank statement or other documents into Excel. Over to you, Ankur. Ankur, you can start now. I think there's some technical glitch and Ankur seems to have got logged off. So Ankur PC has restarted. He will join in a minute. Hello. Yes, Ankur, you are audible. I'm audible, Karan? Yes, you are audible, Ankur. I've given you the course rights as well, Ankur. You can start. I think he is not able to listen to us. Okay, thank you, Karan, for the giving the CVOCAs this opportunity. I'll share my screen. तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम नॉर्मली 3 चीज देखेंगे कि पीडीएफ टू कोई भी डॉक्यूमेंट हम एक्सेल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे हमारे हमें क्यों करना चाहिए पीडीएफ टू एक्सेल। सेकेंड चीज हम देखेंगे कि कोई भी पीडीएफ बैंक स्टेटमेंट है उसे हम एक्सेल में कैसे कन्वर्ट करें यूजिंग थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जैसे सुविध। और थर्ड चीज हम देखेंगे कि जो पीडीएफ टू एक्सेल बैंक स्टेटमेंट है उसको हम डायरेक्ट टैली में कैसे इंपोर्ट करें यूजिंग थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। तो ये 3 चीज आज हम ये सेशन में कवर करेंगे। कोई भी पीडीएफ टू एक्सेल में कैसे कन्वर्ट हो यूजिंग पावर क्वेरी। बैंक स्टेटमेंट अगर कोई बैंक स्टेटमेंट पीडीएफ में आता है उसे हम एक्सेल में कैसे कन्वर्ट करें यूजिंग थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। और थर्ड चीज हम सिलेक्ट करेंगे कि जो भी बैंक स्टेटमेंट आता है उसको डायरेक्टली टैली में कैसे हम इंपोर्ट करें। तो हमें ये क्यों करते हैं हम पीडीएफ टू एक्सेल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मेजॉरिटी टाइम वी रिसीव द मैक्सिमम डेटा इन पीडीएफ फॉर्मेट लाइक बैंक स्टेटमेंट कैपिटल समरी रिपोर्ट अदर फॉर्म 16 डेटा। तो बहुत सारी चीज हमें पीडीएफ में आते हैं और ये चीजें हमारे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए और अदर एक्टिविटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू बी कन्वर्टेड। और इसका एडवांटेज ऐसा हो सकता है आपको कि अगर आपने एक क्लाइंट के लिए कन्वर्जन कर लिया तो सिमिलर फॉर्मेट सिमिलर चीज दूसरे क्लाइंट के लिए आपको बार बार करने का जरूरत नहीं है। इट विल बी इजीली गेट कन्वर्टेड इन एक्सेल यूजिंग द सेम मेथड। आपको पूरे स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ द कन्वर्टिंग द पीडीएफ इनटू एक्सेल।
पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए मेजॉरिटी हमें 5 स्टेप्स करने रहेंगे। एक तो कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपको एक्सेल ओपन करके उसमें पावर क्वेरी एक्सेस करना है। पावर क्वेरी में आपको पीडीएफ का फाइल सिलेक्ट कर उसका पाथ देना है। वंस यू गिवन द पार्ट दैट यू हैव टू लोड द पीडीएफ इनटू पावर क्वेरी, देन आपको उसके बाद तो जो भी आपके स्टेप्स है 3 4 5 आपको जितने स्टेप्स रिक्वायर्ड है, जो आपको फॉर्मेट में लेके आने के लिए जो स्टेप्स आपको फॉलो करने वो स्टेप्स करके ट्रांसफॉर्म करना है डेटा को, एंड देन ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म डेटा को आपको एक्सेल में लोड करना है। वंस यू कंप्लीट दिस 5 स्टेप्स, योर पीडीएफ विल बी कन्वर्टेड इनटू एक्सेल इजीली। Later on, for similar type of file or same file, you don't have to again all the steps. Just आपको ये कोई भी आपको जस्ट इंपोर्ट करना है और पाथ चेंज करना है। जैसे आपका नया पाथ आ जाएगा तो ये आपका एक्सेल में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। लेट्स हम बात करने से हम डायरेक्ट इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं आज आपके सामने, जिससे आपको पता चले कि इट इज इजी है कि डिफिकल्ट है, कितना इजी जाता है। ओके, तो हम आज एक एक्सेल फाइल लेते हैं, बैंक स्टेटमेंट लेंगे कन्वर्ट करने के लिए टू पीडीएफ टू एक्सेल। तो ये मैंने बैंक स्टेटमेंट हमारे पास जो पीडीएफ में आया हुआ है, पीडीएफ टू एक्सेल में है। और इसको रन करने के लिए हमें एक एक्सेल चाहिए, तो हम एक्सेल ओपन करेंगे। पावर क्वेरी रन करने के लिए अगर बस आपके पास एक्सेल लाइसेंस तो ठीक है, अगर लाइसेंस नहीं है तो आप कोई भी एक्सेल यूज कर सकते हो। अगर थोड़ा जूना वर्जन है तो आपको एडिशनल एड ऑन करना है पावर क्वेरी का इंस्टॉल करने का माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट से, विच इज इजीली अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये हमारे पास आप देखेंगे तो ये हमारे पास एक बैंक स्टेटमेंट है जो अराउंड 3 पेज का है। इसमें 2 पेज में डेटा है। अब हम इसको एक्सेल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये एक्सिस बैंक का बैंक स्टेटमेंट है, तो इट इज हमने रेफरेंस के लिए एक्सिस बैंक का बैंक स्टेटमेंट लिया। आप कोई भी बैंक का बैंक स्टेटमेंट ले सकते हो। तो आपको एक प्लेन एक्सेल लेना है। एक बार आपने एक्सेल ले लिया, एक्सेल में आपके पास एक प्लेन एक्सेल लेना है। अभी पहले आपको एक्सेल में क्या करना है, पावर क्वेरी का डेटा का पाथ देना है, जिससे ये पीडीएफ एक्सेल में आ जाएगा। तो हमें इसके देने के लिए हमें क्या करना है, एक आपको टूल दिखेगा इधर टूल बार में, डेटा, उस पर क्लिक करना है। डेटा क्लिक करने के बाद आपको इसमें गेट डेटा पे क्लिक करना है। गेट डेटा पे क्लिक करेंगे, आपको इसमें ऑप्शन पूछेगा आपको कहाँ से फाइल लेना है। तो वी हैव टू गिव फ्रॉम फाइल और उसमें पीडीएफ से देना है। तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे, आपका एक्सेल पाथ मांगेगा। तो हमें यहाँ पे एक्सेल में हमारे पीडीएफ का पाथ देना है फाइल का। तो आपको जस्ट पीडीएफ का जहाँ पे आपने सेव किया पीडीएफ उसका पाथ देना है, और वो जैसे आप उसको पाथ देंगे वो डेटा ले लेगा। जैसे आप पाथ देंगे, एक आपका पावर क्वेरी का एक्सेस टूल ओपन हो जाएगा। नाउ द एक्सेल ने पीडीएफ फाइल से डेटा अपने यहाँ पे ले लिया। ये कोई भी बैंक के लिए आप कर सकते हो, कोई भी फाइल के लिए आप यूज कर सकते हो। कोई भी पीडीएफ फाइल है तो उसके लिए आपको ये मेथड स्टार्टिंग में डेटा देने के लिए फॉलो करना है। जैसे आप डेटा पार्ट डालोगे, ये पावर क्वेरी का टूल्स ओपन हो जाएगा। तो ये एनालाइज करेगा कि आपने जो पीडीएफ दिया है उसमें क्या है। तो एक्सेल में एनालाइज द डेटा कि आपने जो पीडीएफ दिया है उसमें टेबल है, पेजेस है, कि कुछ डेटा ब्लैंक है, इमेज है। तो ये इमेज डिटेक्ट नहीं करता है, ये सिर्फ टेबल और पेज डिटेक्ट करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सिलेक्ट उसने देख लिया कि आपने जो एक्सेल फाइल दिया उसमें टेबल्स है और कुछ पेजेस है। तो अभी आपके पास एक ऑप्शन है कि आपको कौन सा टेबल चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल सिलेक्शन को सिलेक्ट आपको सिलेक्ट कर सकते हो आपको कौन सा टेबल ही कन्वर्ट करना है। तो आप कभी कभी देखेंगे तो इसमें ड्रॉ डेटा है, तो पीडीएफ में से कोई टेबल में क्लाइंट का डेटा है, कोई टेबल में बैंक का डिटेल ट्रांजेक्शन है, कोई टेबल में कोई क्लोजिंग बैलेंस है और कुछ भी नहीं, खाली इन्फॉर्मेशन है। तो हमें चाहिए कि हमारे पास जो डेटा में ट्रांजेक्शन है वही डेटा है।
तो इसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है कि आप सिलेक्ट करो एक इंडिविजुअल टेबल को, बट इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आपके पास 2 से 3 टेबल है तो ठीक है आप कर सकते हो इजीली, बट अगर आपका टेबल्स इज मोर देन 10, 20, 30 तो आप कैसे करोगे? तो इसका सॉल्यूशन सिंपल है कि आपको इंडिविजुअल टेबल को सिलेक्ट नहीं करना है, तो हम यहाँ से अनसिलेक्ट कर देंगे, हमें पूरे फाइल को ही सिलेक्ट कर देना है। जैसे आप फाइल को सिलेक्ट करोगे आपके पास एक नीचे ऑप्शन आएगा ट्रांसफॉर्म डेटा का, तो आपको ये ट्रांसफर डेटा पे क्लिक करना है। तो ये जो डेटा आपको वहां पे दिख रहा था ये आपको पावर क्वेरी में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इससे अब अगर आप सिलेक्ट करोगे तो सिर्फ 2 सिलेक्ट किया तो नेक्स्ट टाइम दूसरा फाइल लेगा तो 2 ही सिलेक्शन रहेगा, बट मोर देन उससे ज्यादा रहेगा तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक्सेल को लगा कि आपने उसको सिर्फ सिलेक्शन है 2 ही सिलेक्ट करने का। तो हम लोग क्या करेंगे, उससे बेटर है कि हम लोग उससे पहले सब सिलेक्शन करें। जैसे आप सिलेक्ट करोगे ऑल फाइल, ये यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, आपको यहाँ पे दिखेगा पेज टेबल टेबल। तो अभी हमने देखा कि हमारा डेटा टेबल्स में आ रहा है, तो हमने देख लिया था। आप यहाँ पे भी एक बार सिलेक्ट करके देख सकते हो कि आपको नीचे यहाँ पे दिखेगा टेबल आ रहा है, तो ये टेबल है। तो हमें सिर्फ टेबल का डेटा चाहिए, पेज का डेटा नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट कर देंगे जो पेज है डेटा। तो ये निकालने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो। आपको ये एरो दिख रहा है काइंड कॉलम में, आपको एरो दिखेगा, एरो पे सिलेक्ट करिए, इसमें आप यहाँ पे अनटिक कर दीजिए जो आपको नहीं चाहिए वो, या फिर मल्टीपल है जैसे कि आपके पास पेज की जगह और भी कुछ डेटा आ सकता है, बट हमें टेबल ही चाहिए, तो आप यहाँ पे टैक्स फिल्टर करके इक्वल टू टेबल लिख देंगे। और जिस टेबल यहाँ पे अपने ऑप्शन आएगा तो आप यहाँ पे लिख दे टेबल, जो कॉलम में टेबल लिखा है वही आएगा, बाकी का कॉलम नहीं आएगा। इसको अल्टरनेट करने का और एक तरीका भी है, समझो आपके पास ऐसा है तो आप जो चाहिए, आप जो समझो आपको टेबल चाहिए तो टेबल को सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, टैक्स फिल्टर करिए और इक्वल टू करिए, तो ये क्या ले लेगा ऑटोमेटिक, जो कॉलम में टेबल लिखा है वही कॉलम आपको शो करेगा, बाकी कॉलम अनहाइड कर देगा। नाउ अभी हमें ये हर एक जो टेबल है आपने उसको टेबल का डेटा एक्सपांड करना है, तो एक्सपांड करने के लिए आपको यहाँ पे टेबल कॉलम में एक एरो दिखी आइकॉन दिखिए दोनों साइड एरो का, इसका मतलब है एक्सपांड टेबल। हम सिलेक्ट करेंगे, जैसे आप सिलेक्ट करेंगे आपको एक इधर 2 ही कॉलम दिखेंगे, बट इधर एक एरर दिख रहा है लिस्ट में भी इनकम्प्लीट, मतलब कुछ तो डेटा कम है, तो आपको इसको करना है लोड मोड, ये विदाउट फिल आपको करना है। अगर आप वो नहीं करोगे तो आपका डेटा पूरा नहीं आएगा। नाउ अभी ये क्या कर रहा है, ये आपको दिखा रहा है कि आपके टेबल फॉर्मेट जितने भी टेबल थे 1 to 9 जो आपको टेबल दिख रहे हैं पीछे, वो 1 to 9 टेबल में कितने कॉलम, किसी में 2 थे, किसी में 4 थे, किसी में 5 थे, किसी में 7 है, तो मैक्सिमम जितने अवेलेबल कॉलम से वो ले लेगा। हमें ऑल कॉलम को सिलेक्ट करना है, प्रीफिक्स हटा देंगे हम लोग, ओके करेंगे। जैसे हम ओके करेंगे आपका हर टेबल वाइज, टेबल 1 में जितने भी समझिए टेबल 1 में आपके 3 कॉलम्स है तो 3 आ जाएंगे, फिर टेबल 2 में 2 ही है तो 2 आ जाएंगे, फिर टेबल 3 में जितने हैं तो हर एक टेबल वाइज एक्सपांड हो जाएगा डेटा आपका। तो जो जो डेटा आपको चाहिए था वो डेटा सब इसमें एक्सपांड हो गया है ना। हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट करेंगे जो कॉलम हमें नहीं चाहिए उसको हम हाइड कर देंगे। तो सिंपल है, उसके लिए करने के लिए स्टेप हमें क्या चाहिए, हमें डिटरमाइन करना है। तो हमें क्या चाहिए, डेट का कॉलम चाहिए, एक चेक नंबर का कॉलम चाहिए, एक पर्टिकुलर का कॉलम चाहिए, एक डेबिट कॉलम चाहिए, एक अमाउंट क्रेडिट का चाहिए और बैलेंस अमाउंट, इतने कॉलम चाहिए, बाकी का हमें नहीं चाहिए। तो जो कॉलम हमें चाहिए तो हमें कॉलम 1 से लेके कॉलम 6 तक चाहिए, तो हमें वो कॉलम सिलेक्ट करना है। हम क्या करेंगे, कॉलम सिलेक्ट करेंगे 2, 3, 4, 5 और 6, ये 4 कॉलम सिलेक्ट करेंगे। अभी आपको एक टूल दिखेगा ऊपर होम्स में, टूल दिखेगा रिमूव कॉलम्स का, तो रिमूव कॉलम पे चलेंगे, रिमूव अदर कॉलम। तो इसका मतलब होता है अगर जो आपने सिलेक्ट किया वो कॉलम रहेंगे, जो सिलेक्ट नहीं किए वो रिमूव हो जाएंगे। तो हम करेंगे रिमूव कॉलम, तो जैसे हम रिमूव करेंगे आपके अननोन अनरिक्वायर्ड कॉलम हट जाएंगे ना। हम एक चीज देख रहे हैं कि इसमें पर्टिकुलर्स में कुछ नल नल ना हो, हमें वही डेटा चाहिए जिसमें ट्रांजेक्शन हो, नरेशन हो। तो जिसमें नरेशन नहीं हमें नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, फिल्टर वापस फिल्टर करेंगे। फिल्टर का मैंने आपको दो तरीका बता दिया, आप एरो को करके टैक्स फिल्टर करके भी कर सकते हो, या फिर सिंपल है नल पे सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, टैक्स फिल्टर करो, डज नॉट इक्वल टू पे क्लिक करो। इसका मतलब रहेगा कि जो भी कॉलम में नल नहीं है वो कॉलम आपको रो दिखेगा, बाकी के रो हाइड हो जाएंगे। तो आपने सिंपली देख लिया कि जिसमें नल था पर्टिकुलर कॉलम में वो हाइड हो चुके हैं। अभी सिर्फ जिस कॉलम में पर्टिकुलर में डेटा है अदर देन नल थिंग्स है वो अवेलेबल है ना। हम ये देखेंगे कि ये जो फर्स्ट कॉलम है ये हमारा हेड का नाम है ना, वी रिक्वायर दिस कॉलम एज ए हेडर। तो इसके लिए सिंपल है, हमें पावर क्वेरी में एक इजी टूल्स अवेलेबल है कि होम्स में जाएंगे, आपको इधर दिखेगा यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर, तो आपको सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करना है सिंपल।
जैसे आप क्लिक कर दोगे ये फर्स्ट रो को अपना हेडर बना देगा और हेडर की जगह पे आ जाएगा। जैसे आप हेडर करोगे, हेडर के साथ एक और चीज करता है चेंज टाइप का। अगर आप इधर राइट साइड देखेंगे अप्लाई स्टेप्स में, प्रमोटर हेडर यहाँ पे आ गया, उसके बाद चेन टाइप हो गया। चेन टाइप तो ये पावर के ऑटोमेटिक सर्टेन डेटा को एनालाइज करके उसके हिसाब से उसको डेटा फॉर्मेट करता है। हमें वो नहीं चाहिए क्योंकि हम अपने हिसाब से इसको डेटा को फॉर्मेटिंग करेंगे, टाइप करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, जैसे कि डेट है तो ये डेट फॉर्मेट में हमें चाहिए, तो इसके लिए सिंपल है, आपको यहाँ फर्स्ट कॉलम हमारा ट्रांजेक्शन डेट है तो ये डेट फॉर्मेट होना चाहिए, जिससे हमारे लिए इजी हो जाएगा उसको एनालाइज करना। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे कॉलम को, यहाँ पे ऑप्शन दिखा डेटा टाइप, वहां पे लिखा एनी की जगह पे हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे डेट। सिर्फ डेट पे क्लिक करना है, डेट टाइम पे करेंगे तो डेट के साथ टाइम भी आ जाएगा, तो हमें सिर्फ डेट चाहिए तो हम डेट पे सिलेक्ट करेंगे। ये आपका पूरा कॉलम डेट फॉर्मेट में होगा। अभी हमें अमाउंट्स कॉलम को नंबर में चाहिए, तो हम कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, तीन कॉलम हमको फॉर्मेट में चाहिए, नंबर फॉर्मेट चाहिए। तो इसके लिए आपके पास सेम ऑप्शन आप यहाँ पे सिलेक्ट करके एनी करके डेसिमल कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे लिख रहा है ABC 1 2 3 ABC 1 2 3 ABC 1 2 3, आप वहां पे भी सिलेक्ट करके उसको डेसिमल नंबर पे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सिंगल सिंगल कॉलम आपको करना है, और सिलेक्ट करके आप डेटा टाइप में से भी डेसिमल नंबर कर सकते हैं। तो अभी हमारा क्या हो गया, फर्स्ट कॉलम डेट फॉर्मेट में हो गया, पर्टिकुलर टैक्स फॉर्मेट में हो गया। अगर आप ABC लिखा है तो टैक्स और नंबर फॉर्मेट, टैक्स फॉर्मेट में, और 1.2 है तो डेसिमल फॉर्मेट में, तो ये हमारा प्रॉपर हो गया डेसिमल फॉर्मेट। नाउ वी सी देयर इज एन रेड मार्क शोइंग इन ट्रांजेक्शन डेट। तो रेड मार्क का क्या मतलब होता है, कुछ तो डेटा में एरर है। तो डेटा में एरर क्या है कि आपने जो डेटा को चेन टाइप के डेट फॉर्मेट में, आपके ये कॉलम में कुछ ऐसे डेटा है जिसका फॉर्मेट डेट टाइप के सिमिलर मैच नहीं करता है। तो ऑब्वियसली जो कॉलम में डेट नहीं है वो ट्रांजेक्शन डेट, ट्रांजेक्शन कॉलम कॉलम ही नहीं है, रो नहीं है ट्रांजेक्शन का। तो जो रो में डेट नहीं हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल ट्रांजेक्शन डेट को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसमें लिखेंगे, सिलेक्ट करेंगे रिमूव एरर्स को। तो जैसे आप रिमूव एरर पे क्लिक करेंगे, जो जो कॉलम में डेट्स नहीं है और जो कॉलम में डेट फॉर्मेट नहीं है वो निकल जाएगा। अभी हम एक इसमें नल कॉलम एक्स्ट्रा दिखा हमारा ब्लैंक कॉलम से, तो इसको निकालने के लिए सेम फिल्टर करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, डेटा फिल्टर डज नॉट इक्वल टू नल। तो अभी जो जो कॉलम है डेट फॉर्मेट में, तो हमने क्या क्या फिल्टरिंग किया, एक किया फिल्टर पर्टिकुलर कॉलम, जो कोई पर्टिकुलर कॉलम में नल है वो नहीं रहेगा। फिर डेट फॉर्मेट कॉलम में जो डेट फॉर्मेट में नहीं वो डेटा हाइड हो जाएगा, और जो नल है डेट फॉर्मेट में वो हाइड है, बिकॉज उसमें ट्रांजेक्शन नहीं है। नाउ हम देखें हमारा डेटा सब कुछ प्रॉपरली रेडी हो गया। अब हम इसको नाम दे देंगे, प्रॉपर्टीज जहाँ पे नेम आता है आप हम दे देंगे PDF एक्सेल बैंक। ना हमें इसे एक्सेल में चाहिए तो इसको लोड करना है, सिंपल लास्ट स्टेप से। यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा क्लोज एंड लोड का, तो जैसे आप क्लोज एंड लोड पे एरो पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे लास्ट क्लोज एंड लोड एंड क्लोज एंड लोड टू दिखेगा। अगर आप फर्स्ट करते हो तो डिफॉल्ट टेबल फॉर्मेट में डेटा फेच पुश कर देगा। अगर हमें दूसरे फॉर्मेट चाहिए तो अपने को सिलेक्ट करना है क्लोज एंड लोड टू। तो जैसे क्लोज एंड लोड टू करेंगे एक डायलॉग ऑप्शन हो जाएगा, ये आपको पूछेगा आपको कौन से फॉर्मेट में इनपुट डेटा करना है, जैसे कि आपको टेबल फॉर्मेट चाहिए, पाइवट टेबल में चाहिए, पाइवट चार्ट में चाहिए, कि खाली आपको डेटा यहाँ पे नहीं चाहिए, सिर्फ कनेक्शन के लिए, दूसरे पावर करे के लिए यूटिलाइज करना है उसको। तो नहीं, हमें डेटा टेबल में चाहिए, हम टेबल सिलेक्ट करेंगे। नाउ यू हैव टू ऑप्शन, यू नीड एग्जिस्टिंग वर्कशीट में चाहिए कि यू रिक्वायरिंग न्यू वर्कशीट, तो हम करेंगे न्यू वर्कशीट में और उसको ओके करेंगे। जैसे आप ओके करोगे आपका पूरा का पूरा बैंक स्टेटमेंट PDF टू एक्सेल में यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में आ जाएगा। लोड हो रहा है यहाँ पे, तो आपका पूरा 2 पेज का बैंक स्टेटमेंट 59897 ट्रांजेक्शन का एग्जिट आ गया। नाउ ये हमने एक्सिस बैंक का लिया था, ये फॉर्मेट बैंक टू बैंक डिफर कर सकता है, हर बैंक वाइज अलग फॉर्मेट आता है, तो आपको हर बैंक वाइज एक बार एक्सेस करना है। क्या मेरा क्वेश्चन सबको आया कि क्या मेरे को दूसरे बैंक, सेम बैंक के लिए दूसरे बैंक के लिए सेम यूटिलाइज हो सकता है? अगर एक्सिस बैंक का हमने किया है, अगर एक्सिस बैंक का आप कोई दूसरा बैंक PDF लेते हो तो क्या वो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा कि मुझे वापस से पूरे करने पड़ेंगे? तो नहीं, वो इजीली कन्वर्ट हो जाए, आपको हर एक स्टेप वापस फॉलो करना नहीं है। हमने प्रैक्टिकली करके देखते हैं अभी, अगर इसे 2 पेज से डेटा ज्यादा है तो इजीली होगा कि नहीं होगा।
तो हाँ हो जाएगा। तो हाउ, अभी आपको यहाँ पे राइट मिलेगा 57 रोज लोडेड है, मतलब ये 57 ट्रांजेक्शन इसमें है ना। हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं, ये पीडीएफ को बंद कर दे, दूसरा पीडीएफ लेते हैं जिसमें ज्यादा पेजेस, तो हम ये लेंगे पीडीएफ टू एक्सेल वाला दूसरा पेजेस, दूसरा पीडीएफ लेते, उसको ट्राई करके देखते उसको कैसे हम इंपोर्ट करेंगे। तो ये चेंज होता है। अभी ये कितने पेज का है? 19 पेज का। ये 19 पेज का बैंक स्टेटमेंट है, सेम बैंक का है बट अनदर क्लाइंट का। तो हम क्या करेंगे, इसको 19 पेज का इंपोर्ट करके देखते हैं। तो क्या करना है आपको, उसके लिए सिंपल है, आपने जो पावर क्वेरी बनाया है या आपने पावर क्वेरी बनाया, इसको एडिट करना। आपको इसमें सिर्फ 2 से 3 स्टेप करने पड़ेंगे, खाली इसको पीडीएफ का जो आपने पाथ देता दूसरे पीडीएफ का, नाउ टू गिव द अनदर पीडीएफ पार्ट, आपने जो पीडीएफ करना है उसका पाथ देना है। उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, आपको पावर क्वेरी ओपन करना है। तो पावर कैसे ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको डेटा दिख रहा है, डेटा पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्वेरीज एंड कनेक्शन ओपन, यहाँ पे क्लिक करना है। आपका जो पावर क्वेरी था, मेरा लास्ट वाला है, तो मैं लास्ट वाले पावर क्वेरी को राइट क्लिक करूंगा, वहाँ पे एडिट करूंगा, तो आपको वापस से पावर क्वेरी ओपन हो जाएगा एडिट करने के लिए। नाउ इफ यू सी कि हमारा पाथ क्वेरी एडिट हो गया, नाउ हमें सोर्स मेन पाथ चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, ये सोर्स में जाएंगे, सोर्स को सिलेक्ट करेंगे, हमने यहाँ पे पीडीएफ टू एक्सेल बैंक 2 का पाथ देना है, हमें बैंक का पाथ बैंक 1 का देना है। तो हम यहाँ पे सेटिंग वाले आइकॉन को क्लिक करेंगे राइट साइड पे अप्लाई स्टेप में। जैसे आप इस क्लिक करेंगे, आपको पाथ पूछेगा कि आपको सोर्स में क्या चेंज करना है। तो हमें क्या चेंज करना है, फाइल का पाथ, हमें फाइल चेंज करना है। यहाँ पे ब्राउज करिए आप, इसको अभी हमें ये पाथ फाइल देना है, ये पाथ का फाइल दीजिए, इंपोर्ट करिए और जस्ट आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके करोगे, ये हर ले लेगा, इसमें 17, 18, 19 फाइल है, इसका लास्ट स्टेप ऑटोमेटिक फॉलो कर लेगा। अभी जस्ट हमें क्लोज एंड लोड करना है। जैसे हम क्लोज एंड लोड करेंगे, ये अपना फाइल्स को अपडेट करेगा। लोडिंग डेटा आ रहा है, नाउ फिक्स 569। तो जस्ट 2 मिनट्स में ये आपका पूरा 569 पेज का बैंक स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर लेगा। तो जस्ट इसमें है कि आपको हर बैंक वाइज का फॉर्मेट एक बार बना के रखना है। एक बार बना लिया आपने, उसको 10 बार करो, 15 बार करो, जितने भी क्लाइंट्स हैं हर एक क्लाइंट के लिए आप वो बैंक के लिए फॉर्मेट सेम रहेगा, तो आप इजीली यूज कर सकते हो। जस्ट आपको एक बार फॉर्मेट देखना, उसके बाद आपको डिफिकल्टीज चला जाएगा। बट अभी समझो कि इंडिया में 91 बैंक कमर्शियल बैंक ऑपरेट कर रहे हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। कभी कभी हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम हर बैंक के लिए फॉर्मेट बना सके, या तो हर एक बैंक का फॉर्मेट इतना सिंप्लीफाई नहीं है जैसे एक्सिस बैंक का अवेलेबल था कि वो सेम फॉर्मेट में हम इजीली कन्वर्ट कर ले फ्यू स्टेप्स में। तो इसके लिए हम थर्ड पार्टी पेड सॉफ्टवेयर के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। और कभी पेड है, कोई कंपनी मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है। मैं फिलहाल सुविध यूज करता हूँ, तो मैं आपको उसका एक डेमो दिखा देता हूँ कि वो हम अगर हमें सब फाइल के फॉर्मेट तो हम थर्ड पार्टी पेड सॉफ्टवेयर यूज करके हमारा और टाइम बचा सकते हैं और इजीली कर सकते हैं। तो डेमो लेने के लिए हमने सुविध का एक दो चीज देखेंगे। एक तो पीडीएफ, कोई भी पीडीएफ बैंक स्टेटमेंट है वो कैसे कन्वर्ट होगा और क्या है। तो हमने इसके लिए दो चीज लिया है। एक हम लोगों ने बैंक लिया है जो पीडीएफ है, बट बैंक से पीडीएफ एज इट इज आया है, वो हम लेंगे। एक हम लेंगे बैंक स्कैन किया हुआ, ये समझो पीडीएफ, ये 66 पेज का बैंक स्टेटमेंट है। अभी इसको कन्वर्ट करना है एक्सेल में, तो आपको इसका फॉर्मेट रेडी करना है। अगर आपको उतना टाइम नहीं है तो आप दूसरे पेड सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। और एक चीज हम एडिशनल लेंगे, बैंक स्कैन, जो बैंक कभी क्लाइंट आपको प्रिंट आउट देके जाते हैं, आइदर उन्होंने प्रिंट आउट दिया तो फिजिकल दिख गया, तो आप उसको स्कैन करके सुविध में डाल के उसको एक्सेल में या तो टैली में कन्वर्ट कर सकते हो। और हम एक नॉर्मल एक्सेल बैंक से आएगा उसको डालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सिंपली आपको सुविध का सब्सक्रिप्शन लेना है, सुविध का ब्राउजर पे ओपन करना है सुविध को। जो डेटा आपको इंपोर्ट करना है टैली में, तो उसका आपको टैली रन करके रखना है। टैली आपको उसका ओपन करके रखना है, पाथ देके रखना है। एक बार आप टैली ओपन करके रखेंगे तो वो
को पता चलेगा कि हमें ये क्लाइंट ये टैली डेटा में पाथ में डेटा को डालना है। तो और आपको सुइच में बैंक सिलेक्ट करना है कि हमें ये बैंक चाहिए ना। हमें क्या करना है, एक बल्क सुइच में ऑप्शन है बल्क अपलोड का, यहाँ पे बैंकिंग ऑप्शन, यहाँ पे बैंकिंग पे सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट का, एक इंपोर्ट पे क्लिक करना है। नाउ स्विच ऑटोमेटिकली फेच कर देगा कि कौन सा बैंक आपके टैली में अवेलेबल है। तो आपने टैली में जो भी बैंक का नाम दिया रहेगा वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। आपको वहां पे सिर्फ सिलेक्ट करना है कि मेरे को ये बैंक समझो 3 में पेश करना है। तो हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे बैंक 3 में, और जो हमारा पीडीएफ था 66 पेज का उसको हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड कर देंगे तो ये ऑलरेडी आपको मैसेज देगा कि ऑलरेडी अपलोड, आपको वापस अपलोड करना है कि नहीं, और वो प्रोसेस करके देगा। तो हमने आपके लिए इजीली होने के लिए हमने ऑलरेडी 3 अलग अलग बैंक अपलोड करके रखे। एक बैंक डॉक्यूमेंट जो पीडीएफ से आया हुआ है, दूसरा बैंक डॉक्यूमेंट जो स्कैन है, और तीसरा बैंक एक्सेल से। तो एक्सेल का तो इजीली एक्सेल में कन्वर्ट होता है, आपको इसको जरूरत नहीं वापस एक्सेल करना, बट आपको टैली में इंपोर्ट करना है तो यही काम आएगा। नाउ हम देखते हैं कि बैंक जो पीडीएफ है उसको एक्सेल में कैसे करेंगे। तो जैसे ही आपका बैंक कन्वर्ट हो जाएगा तो आपको ओपन करना है। सिंपली यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिप्शन पे आपको राइट क्लिक करना है और एक्सेल एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा। जैसे आप एक्सेल एक्सपोर्ट पर क्लिक करोगे आपका पीडीएफ वाला बैंक स्टेटमेंट ऑटोमेटिक एक्सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये एक्सेल में कन्वर्ट हो गया। सिक्सटी सिक्स पेज वाला बैंक स्टेटमेंट आपका आराम से एंट्री से इजीली एक्सेल में कन्वर्ट हो गया। ना आप इसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हो, रिसीप्ट अलग अलग करके इसको कर सकते हो। अब इसके भी अपने फॉर्मेट को, ये एक्सेल को भी अपने फॉर्मेट बनाने के लिए पावर क्वेरी यूज कर सकते हो, जिससे आपका एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट ऑलरेडी आ जाए। हम वो करते। अभी ये आपने सीख लिया कि हाउ टू कोई भी पीडीएफ है सुई से आप उसको एक्सेल में कैसे कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको उसको टैली में इंपोर्ट ही करना है, विदाउट इंपोर्टिंग आप एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हो। ना हम देखते हैं कि अगर हमें इसको टैली में इंपोर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमें स्कैन डॉक्यूमेंट जो हमने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, जो भी पीडीएफ हम लोग को क्लाइंट स्कैन करके पीडीएफ देते हैं हार्ड कॉपी, उसको हम स्कैन करके भी सुविधा डालेंगे तो भी वो कन्वर्ट कर लेगा। ना मैं आपको ये स्कैन वाला पीडीएफ बता देता हूँ एक बार। ये स्कैन है, प्योरली स्कैन है, प्रिंट आउट क्लाइंट का लिया हुआ प्रिंट आउट स्कैन है, जो हमने सुविधा में डाला है और सुविधा में उसको कन्वर्ट कर लिया है। तो एक आपको देखना है कि सुविध में से टैली में जाने के लिए सुविध का एक डेस्कटॉप ऐप है, कनेक्टर ऐप है, आपको इसको रन करना है। ये रन इसके लिए करना है कि बोर्ड आपके टैली डेटा जो आपने टैली है, तो आपको इसमें 3 चीज ध्यान रखना है। एक तो आपका टैली ओपन होना चाहिए क्लाइंट का, सुविध का डेस्कटॉप कनेक्टर है वो ऐप ओपन होना चाहिए, और सुविध का वेबसाइट वेब वर्जन है वो ओपन होना चाहिए। जिससे आप ओपन करोगे ये कनेक्ट कर लेगा जो भी आपका टैली चलता है। आपको मेक श्योर करना है कि आपका कोई और दूसरा टैली चालू ना हो, एक ही टैली चालू हो, और आपको जस्ट सिंक्रोनाइज मास्टर करना है, सिंक्रोनाइज वाउचर करना है। इससे क्या है, जो जो टैली में आपने लेजर ओपन करके रखे है और वाउचर ओपन करके रही वो कनेक्टर्स के थ्रू वेबसाइट पे इधर फेच हो जाएंगे। ना हमें सिंपली करना है, मुझे ये समझो पेमेंट है, इसको मुझे एक लेजर में डालना है। जैसे कि मेरे को ये पेमेंट लेजर को सस्पेंस में डालना है, तो मैं यहाँ पे सीधा सस्पेंस सिलेक्ट करूंगा। ये टैली का लेजर आएगा यहाँ पे, ये मेरे एंड से मैं हाथ से टाइप नहीं करूंगा, यहाँ पे आपको टैली का लेजर आएगा। जो भी टैली में आपने ऑलरेडी लेजर क्रिएट करेंगे यहाँ पे आ जाएंगे। अभी समझो मेरे को मल्टीपल्स एक साथ करना है, समझो मुझे एक साथ ही जो रिसीप्ट है सबको कस्टमर में डालना है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे रिसीप्ट सिलेक्ट करना है, तो मेरे सारे रिसीप्ट यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में सिलेक्ट ऑल करना है। जैसे मैं सिलेक्ट ऑल करूंगा
सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड अप साइड आप लेजर दिखेगा, वहाँ पे आपको कौन सा लेजर डालना है, मुझे कस्टमर डालना है, तो यहाँ मैं कस्टमर सिलेक्ट करता हूँ। जैसे कस्टमर बोला ये यहाँ पे सब लेजर कस्टमर का ले लेंगे। आपको यहाँ पे वही लेजर दिखेंगे जो टैली में ऑलरेडी आपने क्रिएट किए हैं। जो आपने टैली में क्रिएट नहीं किए वो आपको अलग तरीके से यहाँ पे करना पड़ेंगे लेजर क्रिएट। यहाँ पे क्रिएट लेजर वो टैली यहाँ पे नहीं दिखेंगे आपको। मैंने रिसीट कर लिया, अभी मुझे पेमेंट्स का करना है, तो मैं वापस यहाँ पे पेमेंट टाइप करूंगा। आप नरेशन से भी सर्च कर सकते, आपको पता है पर्टिकुलर नरेशन को मेरे को सर्टन एक्सपेंस में डालना है, तो आप नरेशन को भी यहाँ पे टाइप कर सकते हो और कर सकते हो। तो नरेशन टाइप करो तो वो नरेशन वाले आ जाएंगे, फिर उसको डाल दो। तो मुझे पेमेंट्स वाले सारे एक समझो ये मैंने ऑलरेडी करके रखा, तो मुझे ये नहीं चाहिए, सिर्फ ब्लैंक ही चाहिए। जो ब्लैंक है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ब्लैंक रेकॉर्ड्स वाला ऊपर, तो इस पे सिलेक्ट करेंगे ब्लैंक रेकॉर्ड पे, तो जो ऑलरेडी आपने लेजर दे दी वो नहीं आएंगे, जो जिसपे लेजर नहीं मार्क हुआ है वही आपको दिखेंगे। अभी मुझे ये सब कुछ देना है सेंट्री क्रेडिटर में शिफ्ट करना है, तो मैं यहाँ करूंगा या तो परचेज में शिफ्ट करूंगा, तो मैं यहाँ पे परचेज सिलेक्ट कर दूंगा, सब परचेज में आ जाएंगे। ना मुझे एक बार वापस वेरीफाई करना है कि कोई ब्लैंक तो नहीं रह गया, सब आ गए ब्लैंक, एक भी ब्लैंक नहीं है। मैंने सब डेट जो भी पूरा बैंक से सबको मार्क कर दिया, उसको सेव करूंगा डेटा को। अभी यहाँ पे ऑप्शन आएगा अभी मेरा डेटा सेव हो चुका है। नाउ आई एम टू पुश दिस डेटा टू टैली, तो अभी जस्ट एक आपको क्लिक करना है सेंड टू टैली के ऊपर। जैसे सेंड टू टैली करोगे ये योर ट्रांजेक्शन सिंक्रोनाइजिंग आ जाएगा और आपका यहाँ पे ट्रांजेक्शन टैली में पुश होता है। वेरी बहुत टाइम कंजम्पशन बहुत कम जाता है, हर एक एंट्री मारने के लिए आपको इतना एफर्ट जाता है कि वो नरेशन में गलती कर सकता है, नरेशन टाइप नहीं करेगा। नरेशन में बहुत आजकल यूपीआई के नरेशन बहुत बड़े बड़े आते हैं, उसमें न्यूमेरिक का मिस्टेक हो सकता है, तो ये सब टाइप करने में डिफिकल्टी जाता है। तो ये सब आपको बहुत एफर्टलेस हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा ऑटोमेटिक नरेशन आपका एज इट इज टैली में इंपोर्ट हो जाएगा। आप आपका डेटा ऑलरेडी इंपोर्ट हो गया। हम एक बार टैली ओपन करके देखिए डेटा इंपोर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। लेट्स टेक डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे टोटल ट्रांजेक्शन इंपोर्ट हो चुके हैं। इसमें कुछ एरर आया तो ये ट्रांजेक्शन फेल हो गए, हम वापस इंपोर्ट करेंगे। सिलेक्ट ऑल सेंड टू टैली, उसको पता है कि 29 पेंडिंग ऑलरेडी हो चुका है, तो अभी से वो 29 करेगा। तो वंस डेटा ऑलरेडी आपके पास टैली में अपलोड हो जाएंगे तो वो रेकॉर्ड में सेव कर लेता है सिंक्रोनाइज थ्रू, ये टैली डेटा ऑलरेडी सिंक्रोनाइज हो चुका है। ये कंप्लीटेड दिखा रहा है। एक बार चेक करें तब ट्रांजेक्शन आया है कि नहीं आया। नहीं आया, हम वापस एक बार
हम दूसरा बैंक ट्राई करते हैं प्रोसेस करने का, शायद उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगा। लेट्स टेक दिस बैंक, एक्सेल वाला बैंक हम लेते हैं, इसको भी सेम मेथड से ट्राई करेंगे। ये हमने बैंक 3 में डाला है, हम रिसीट सारे को सिलेक्ट करके कस्टमर में डाल देते हैं और पेमेंट सारे सिलेक्ट करके हम सस्पेंस में डाल देंगे। ये हो जाएगा, हम सिलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे, सिलेक्ट और सेंड टू टैली। ओके, it will take a few minutes to import the transaction. एक आपको ध्यान रखना है कि आप साथ में से कभी एंट्री ना मारो दूसरे वही टैली में, अदरवाइज इट विल गेट स्टक समवेयर। अभी ये इंपुट हो रहा है, तो शायद 300 आने से इजीली विद इन फ्यू मिनट्स में ये आपकी इंपुट हो जाएंगे टैली में। तो जब भी एक स्टाफ को जो काम करने के लिए 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लगता है, वो आपके फ्यू मिनट्स में हो जाएगा पूरा काम। स्विच को कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है कभी कभी, तो बैंक डिपेंड्स ऑन बैंक स्टेटमेंट और नंबर ऑफ पेजेस इन दिस बैंक स्टेटमेंट। जैसे कि हमने यहाँ पे जो बैंक स्टेटमेंट डाला था 1000 पेज का, वो ऑलरेडी अभी जस्ट कन्वर्ट हो गया है। तो हमने ये पूरा प्रोसेस इन दैट टाइम बिटवीन ही ये 1000 ट्रांजेक्शन का बैंक स्टेटमेंट उसने एक्सेल में कन्वर्ट कर दिया और ऑलमोस्ट 300 ट्रांजेक्शन भी सारे ट्रांजेक्शन इंपोर्ट कर लिए जो हमने 300 ट्रांजेक्शन देखे। जस्ट हम कंफर्म कर लेते कि एक बार यू टू जस्ट कंफर्म कि हमारे सारे ट्रांजेक्शन आ गए। तो हमारे फर्स्ट बैंक के 30 ट्रांजेक्शन इसने इंपोर्ट कर लिए। तो यू टू जस्ट चेक के जो भी हमने पूरा बैंक स्टेटमेंट डाला था ये इसने सस्पेंस में डाल दिया टाइम के लिए, और एक सिर्फ बैंक ट्रांजेक्शन का एक बैंक इसने दिया, और हमने बाकी चीज जो कस्टमर में डाले थे उसको उसने सन्नी डिटेल्स में कस्टमर में डाला। तो इस तरह से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, डेटा इजीली इंपोर्ट टैली में कर सकते हो। आपको इसको मेक करना है कि होने के बाद आप इसको वेरीफाई कर ले कि सब डेटा आया है कि नहीं आया। टेक थोड़ा बहुत कभी एडवांटेज डिसएडवांटेज देता है, बट इट्स ऑलवेज बी गुड फॉर द आवर डे टू डे वर्क लाइफ के इजी जितना हो सके उतना अच्छा है। हमने आज 3 चीज देखा। एक देखा आउट एक चीज हमने आज देख लिया है, एक तो कैसे हम एक्सेल कोई भी डॉक्यूमेंट को पीडीएफ टू एक्सेल में यूजिंग पावर क्वेरी कन्वर्ट कर ले। दूसरा चीज हमने देखा कि हम बैंक स्टेटमेंट को यूजिंग सुविध कैसे एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते पीडीएफ को, और कैसे हम सुविध के थ्रू हम उसको टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं। यू कैन टेक अ डेमो सुविध का अवेलेबल है, उनसे डिस्कस करके आप उनका डिटेल्स और सुविध रिगार्डिंग कोई भी आपको क्वेश्चन वहां पे आप सॉल्व कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस वी कैन हैंडल। थैंक यू अंकुर।
Just one note for all the participants. हम जो भी यहाँ पे techniques दिखा रहे हैं that are used by the members that are giving the sessions by themselves. So ये हम कोई भी ऐप को प्रमोट नहीं कर रहे, ये जो एक्चुअली यूज कर रहे हैं हम वही बताना चाह रहे हैं. मार्केट में काफी ऐसे एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, यू कैन यूज देम आल्सो. So, Karan, I guess you have answered quite a few queries real-time basis, but in case any of the queries are left, you can take one or two, and then maybe we can start with Parin's demo as well. Yes. I think Monish has one query regarding Subit. So whatever query regarding Subit, I think since it is a paid application, we can take up with them only. Also, Ankur has only used Subit for bank statements, so he is not really uh, accustomed about sales entries from Subit. Which are the other third-party apps available like Subit? We may not have used some, but you can search. PDF to Excel कन्वर्ट करने के there are other software PDF to Excel करके भी एक options आते हैं. आप वो कभी कभी फ्री में अगर एक दो पेज है तो आप वो कन्वर्जन PDF टू एक्सेल कन्वर्जन के भी यूटिलिटीज ले सकते हो. देयर आर सर्टेन टैलीज के भी यूजर आते हैं जो आपको एक्सेल से टैली में इंपोर्ट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं. Correct. So, CVOCA members can join the CVOCA practice development WhatsApp group and can post any such queries on that group. And a couple of our members who are using any of the softwares or techniques will be happy to share their experiences. And that's a group where we generally connect and collaborate regularly for these kind of discussions. Monish, we have tried to import sales through Excel in Tally using Suite. We have not tried, I don't know, your sales transaction from Suite to Tally. Yes, we have imported जो भी clients के e-commerce client है उनके जो डेटा आते हैं वो भी हमने Suite से Excel से sales उसको Tally में import करके दिखा है. ये easily हो रहा है, properly हो रहा है. For Excel to Tally, there are many such softwares available, and Excel to Tally करने के लिए directly there is a capability in Tally itself. It's just for PDF you may have to use Power Query if Suite is not available for you. Okay, thank you. I think we can move forward to the next session, and if any questions are left, we can take up at the end of the session altogether. Okay, thank you. Thank you, Ankur. Over to you, Parin bhai. Hi. Thank you, CVOCA, for this opportunity. Thanks a lot. So coming to this session, I have been using personally an Excel utility software, which for the preparation of financial statements for corporates also and non-corporates as well. I'll just share my screen. So this is an automation tool, Excel utilities on type, and it is developed by this Black Horse Excellence. There are various sheets like we have it in our. आपका आवाज नहीं आ रहा है. Just one second. Abhi audible hai? Not audible. Yeah, you are audible. You are audible. Yes, I think Parin, you can go ahead. Yeah, thanks. So there are various Excel sheets like we have it on our financial statements. Apart from that, there are couple of sheets where so first is this master sheet where the details of chartered accountants have to be entered, company, the signatory details. So once you update here, maybe I can show it as a demo, and ABC and director, and it will directly reflect here as a signatory. So this is a one-time exercise which will be required to fill up the master sheet. Maybe a name of director second, and it's reflected out here. Right. So likewise,
once you start, so if I put out the third one, that will also be reflected out here. Right. So this is the first sheet, master sheet, where the one-time exercise will be required. This license version is freezed with this form registration number and name of the form. You cannot change that. So each license is configured with this form registration number. That is the main thing. Name of the entity, SIN number, address is optional, and the previous year and current period. Fixed asset side, so they have options. They have given the fixed asset register. You can maintain the full register out here, and it will calculate the 10 years depreciation for you once you have entered the assets and its life of the asset and the categories. So once this is updated, automatically it will calculate the depreciation and everything. Next option is the grouping side. So that the phase grouping which is there on the liability side and the asset side. This is now they have notes grouping. They have now kept it open that you may be able to change the name. I generally suggest if it is required, then only go and change the name inside the notes, because Schedule 3 has a defined format on the face of the balance sheet. So it is advisable not to have any change. Coming to the very tedious task, which we do it in Excel, the rounding off. So once, as we all know, the company's balance sheets and the profit and loss account is to be rounded off compulsorily since last year into hundred, thousands, lakhs, and millions as per the limits prescribed. So you may just be able to select your out rupees in thousands, and the whole financial statements, once it is refreshed, will be converted into thousands. Once again, if you go back to a normal in rupees and refresh it, it will be available in rupees. Again, the decimal places. Yes, if we are converting into thousands or lakhs, the 2 decimal places is required, and you may select as per that. Themes and layout, I am not going into that. That is just a designing part. This year they have given these features. The latest time where we import the tally, we will see this, but it's visible. So the time and the dates time, like it is coming out here also, last save time. So this is 7th August evening, 15:25. This file was saved last. Like we always see the versions update and everything. So this is available. Great options, printing the financials directly from here, Excel export, PDF export, print annexures, we'll see this, and branch financial statements. Alignments and everything, let's skip it out on the formatting thing. Coming to the next sheet of trial balance. So this is the most important sheet for in preparation of financial statements. So the first we have to on the tally. So tally backup, we have to start it. And one important thing, whenever you on the tally, start it with run as an administrator. This is very important step. So the first step is start with run as administrator. Then you may go to the tally backup. I'll just open out the tally backup. And this is for corporates. I am doing it. Right. Now, this is the financial year which I want to prepare the financial statements. So financial year 23-24. I just have to keep it open. I'll just move this. The next important step is I have to go it in help of the tally. Click on the help, settings, and connectivity. If I press enter, there is a dialog box which comes out which says both yes and the port number.
This port number and the first option both is very important. Of course, ODBC has to be enabled, so it is yes. As you will be able to see, the tally port is the same 9000 here, and it should be same in the tally also. So once you save this, the tally and that Excel which is open out will get connected automatically. Now I have to click out from import from tally. So it's showing trial balance from tally has been imported, past inventories movement entry, closing stock entry, and if profit and loss is transferred to reserve, then reduce P&L to the extent from reserve. So the last entry and the first entry, so changes in inventory entry and the transfer of reserves, that is the one entry for each which is required to be passed when you import the trial balance. Now this is where we have imported the trial balance. It has got imported, right? The first two columns are my primary grouping, which are classified in tally, right? This codes automatically if the black horse utility generates is, if there are there, it comes out, name of the ledger and the amounts. Now, suppose I have a change in inventory. So what I'll do is I'll pass a adjustment entry. For a reserves and surplus. And I will write down the amount. Once this becomes 0, the F2 cell, where my mouse cursor is there, it is showing two ledgers name blank. So that is the first error which I am receiving out here. So I'll check it out where the ledger name is blank. Maybe it can filter it out, and no, it's not giving it out. Yeah. Right. So this name error is gone. Now, this is the most important part where you have to complete the grouping. This is the same thing which we do it in Excel. So बैलेंस शीट के फेस पे कहाँ जाएगा, नोट्स में कहाँ जाएगा, नोट्स के अंदर कुछ लिख के देना है, वहां पे क्या क्या लिख के देना है और कहाँ जाएगा, एंड द एनेक्शर्स ग्रुपिंग विच इज एन एडिशनल थिंग. अभी फेस ग्रुपिंग ऑफ करंट ईयर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूं. ये टू प्लीज ये सारा चीज शेड्यूल 3 के हिसाब से ऑलरेडी ड्रॉप डाउन दिया हुआ है. सो आपको कोई यहाँ पे पंच करना नहीं है, कुछ नहीं करना है, आपको ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करना है. सो फेस ग्रुपिंग, जैसे ही मैं शेयर कैपिटल सिलेक्ट करता हूँ, मुझे यहाँ पे दो ऑप्शन ही आएगा, इश्यूड इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. ऑफ कोर्स अगर शेयर कैपिटल है तो इशू के सामने हम जनरली देखते हैं कि बैलेंस शीट में चला जाता है. दैट इज गॉन. Even if I want to write something, I can write here again. Otherwise also, it will not give me an error. So any errors are there, it will reflect it on this upper tab in the red mark. And the number is the number of errors. So example, these are 20 one line items. मैंने एक fill up कर दिया है. So now 20 are remaining. Annexure grouping side, I personally what generally do is take it the ledger name. So that is very easy to track at the client side that which ledger has been grouped where. Because trial balance grouping may seems to be a cumbersome from him. We'll see how the annexure gets refreshed and वहाँ पे कैसे दिखेगा. Second, I'll just run through it. तो मैं एक
Now fixed assets वो मुझे बोलता है captured from FAR, right? That is there. मैं एक other expenses का ये ले लेता हूँ. So this is an auditor's remuneration. Now other expenses again I can put it out. अभी now some few not I can say hacks but checks कि I want to put down other expenses on all the expenses. Abhi, now, if you see, this trial balance has been imported in an alphabetical order of the ledger name. So मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं मेरा indirect expenses का filter कर दूंगा, and मैं सब में other expenses ये मैं fill up कर देता हूँ. अभी मैं simplicity के लिए सबको administrative में डाल देता हूँ. So what happens is कि ये आपका fill-up थोड़ा जल्दी हो जाएगा. Now if I go in duties and taxes, so other current liabilities, statutory dues, it's done. अभी मुझे यहाँ पे देखना है कि ब्लैंक कौन सा है. So deferred tax asset में is saying specify me कि it is on property, plant and equipment, or it is on bad debts, or what it is. So I'll say PPE. This is again share capital issued. These are bank accounts. So it will be a cash and cash equivalent. All these things will be in alphabetical order. So be ready कि उसको find कैसे करना है and how to complete with this. Now if I go to revenue from operations and sale of services. See, यहाँ पे मुझे ऊपर दिखा दिया है कि this grouping is done. अभी खाली मेरा यहाँ पे एक grouping है. So मैं यहाँ पे भेज देता हूँ. Now once this is done, annexure की grouping में जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैं लेजर के नाम कॉपी कर देता हूँ. सो ये मेरा ग्रुपिंग भी कंप्लीट हो जाता है. एक सिंसियर एंड वेरी डिसिप्लिन मैनर इज रिक्वायर्ड. It will take time for the first year because you will have to do for both the years. But once it is done, it creates wonder. Now I'll show you how the financial statements get prepared. So this grouping is very important. Once this is completed, you may go to the notes column and just click on prepare notes. Notes have been prepared as per the grouping, right? मैं बैलेंस शीट के फेस पे जाता हूँ. This is the balance sheet which has been drawn up. The most tedious part which generally happens is sometimes the balance sheet doesn't tally when we prepare it in normal Excel and give the link from the trial balance of tally. This is the profit and loss account. These are the notes to accounts which are ready. Borrowings, other current liabilities,
FAR, once I update in this sheet, it automatically gets updated here. And this is the asset side notes and the profit and loss account notes. अब एनेक्शर में क्या दिखेगा? सो यहाँ पे जो लेजर लेवल पे था, मुझे यहाँ पे एनेक्शर में जाना है एंड क्लिक करना है प्रिपेयर एनेक्शर. सो ईच एंड एवरी जो हेडिंग है जो नोट्स में है उसके अंदर मुझे लेजर वाइज अपडेट दे देगा कि स्टैट्यूटरी ड्यूज, वहां पे सिर्फ स्टैट्यूटरी ड्यूज दिखता था, यहाँ पे मुझे लेजर वाइज दे देगा कि ये स्टैट्यूटरी ड्यूज के अंदर मैंने क्या डाल दिया है, अदर पेबल्स में मैंने क्या डाल दिया है, फिक्स एसेट्स में मैंने क्या डाल दिया है. एवरीथिंग इज प्रेजेंटेड हियर. If you want there in other expenses, that is also possible, and in annexures is also possible. Any questions till now? Just any confusions or something? Okay, great. Coming back to the balance sheet. So now my balance sheet is ready, my profit and loss is ready, my notes are ready. Now what if I have to give additional notes, like below the share capital? Now, for simplicity, what I have done is, I'll just open the last year's financial statements. Yes. Now, this is the last year's financial statements. ये शेयर कैपिटल है, ये तो एज इट इज आ गया वहां पे. अब मुझे ये नोट्स देनी है. I have to insert these notes. So where do I insert? So there is a tab called QDisk. Here, all the captions of balance sheet, profit and loss account, and additional disclosures are provided, right? So आपको यहाँ पे footnotes में देनी है. Number of notes which you want to provide, you select the number and you just copy paste from your last year's Excel. Once you copy paste it, like if I take it from this year's QDisk, and paste it out in the current year, this note, have to refresh it. Yes. And this note is available. Correct? So, as we can see, all these captions, tabs are available. You just have to select wherever you want to insert the data. Standard notes like rights and preferences attached to the shares. ये एक standard note है. This has been given. Even they have provided the accounting policies. This thing. We can modify this here, there, and there. So these are all editable places. Balance sheet page, P&L page, cash flow statement page are uneditable. You cannot edit at that place. Now, one very simple point. Suppose there are no short-term borrowings here out here, and I don't want my balance sheet, it should come in my printable format.
So you can see on the right hand side, it is showing error, no note, there can be there. So what you can do is just go select no, annexure भी no, ये नहीं आएगा, इसका नंबर भी चला गया. So the sequence of numbering is there properly. If I do it no, the note number is gone. The next note number is automatically updated. You don't have to worry on the sequence on the numbers side. Correct? So balance sheet, trial balance, balance sheet, P&L and notes. And this Q disk provides you for the additional notes. Share disclosures, liability side, long-term borrowing, we give disclosures for the repayment schedule, month, maturity profile, and other notes of the securities, right? So that is also available. Tables are provided wherever required. You just have to input the data. Asset side, footnotes, profit and loss account footnotes. One thing very important, change in inventory and cost of material. This will have to be flown from here. So the material, just leave Chadan. So this is where you can update the change in inventories, notes related to it, and automatically once you refresh it, it will be available at the respective note. Coming to the additional disclosures, very important. Contingent liability, leases, earnings in foreign currency, we all know. So many of us may be preparing that in Word file, many of us may be preparing it in a separate Excel sheet also. But here, everything is at the same place. Related party disclosures. We do it in almost all balance sheets wherever the transactions are there. You select the number of related parties. You write an like if I put Rain, if I put Nihar, and the relationship is right. Once you enter, ये ऑटोमेटिकली आ गया. यहाँ पे मैंने रिलेशनशिप लिख दिया, इसके लिए यहाँ पे रिलेशनशिप आ गया. यहाँ पे मैं डायरेक्टर लिख दूंगा तो नीचे अपने पास डायरेक्टर आ जाएगा. Again, I have to just go refresh it. So ये अपडेट नोट्स का जो टैब है ना, दिस दे हैव गिवन करंट ईयर, लास्ट ईयर तक नहीं था. So when I asked them, so they said कि if there are minor corrections in the trial balance, when you change one grouping or two groupings because of some presentation when you are reviewing it, so then you may just update the notes. So for small updates, you may just update the notes. If there are major updates or preparing, then I would suggest you refresh it the full notes. यहाँ पे आ गया टेबल पूरा बन के. So and now coming to the one of the important aspects कि अगर कुछ मिस्टेक हुआ तो पता कैसे चलेगा. So they have this checks का tab, right? See, these are the errors. Cash flow is not matching with cash and cash equivalent. There is a difference between
property, plant and equipment of balance sheet and notes. Why it is showing? Because I have not updated in FAR. Balance sheet share capital does not match with total. Balance sheet में share capital है 1 lakh and यहाँ पे नहीं है. So all these aspects will be captured here. Once this is 0, you are good to go with the financials. Balance sheet share capital does not match with notes again. So I have to refresh the notes. Maybe I have not refreshed it after the changing or something. उसकी वजह से वो आ सकता है. Correct? Now coming to few of the additional features which they have given. Before that, yes, one of the tab is artist. These are the additional disclosures which were mandated since last 2 years. Right? Title deeds of the immobile property. So you are able to provide, if there are details, you provide it in the table. If you want to write any note, you can write the note. Once you refresh it, it will get captured in the additional disclosures along with the financial statements. Same process which we are doing for QDisk, same process for RDisk. Now coming to the a few of the aspects. Here you are able to see in profit and loss account there are percentage. So we generally, as a chartered accountant, see the year-on-year change, GP percentage, NP percentage. So it will provide you, once the figures are updated, it will provide you with the percentage change. Like this is 100%, so this is other expenses is 27%, my net profit ratio is 72%. All these are updated automatically and are available for analysis. Coming to the tax sheet. So they have added this dashboard. Automatically, once the figures are updated, you will get this dashboard. Additionally, if I go in computation of income, I can prepare the computation right here. Of course, we do prepare in maybe softwares or utilities, but I can at least have a draft out here. Once it is finalized, just go put it in the software and we are good to go. So the whole computation sheet is available out here. Depreciation as per IT Act, you are able to put the data here, calculate automatically as the rates are selected as per the block. Similarly for deferred tax calculations. And all these things you are directly able to export. Once you are done, you can export it in an Excel. IT computation. Right? If I close this, again I get back to the dashboard. So this is on the taxation side. Few analytics which they have provided out here. These are cash flow workings. So I missed to update that. Cash flow also will get updated automatically, but there will be few aspects where you will have to enter the data. And here the level wise, I would say the note wise working will be updated automatically. Now, additionally, again going back to my basic Excel sheet of trial balance. Once I updated this grouping and annexure, I can prepare the balance sheet, profit and loss account, and the full financial statements. Now you will be able to see there is a ITR grouping here also. So ITR grouping 1 and ITR grouping 2. Once you start updating here and the ITR grouping is updated, I'll just do it. So for the benefit of everyone, so we'll be able to export the relevant data. Right? See, this is done. Correct?
Now, what I'll do is, I'll go to this ITR 6 balance sheet. Now they have couple of tie-ups, and you just have to export to the Winman. So what happens is, you export the ITR file from Winman, keep it in the path, give the file name, and you type export. Currently it is showing a runtime error because there is no file. I've kept it out right here. So here you have to keep the file path name, file name, and just click on export to Winman. So what will happen is, this full data will be captured in the Excel utility which you have exported from the Winman. And you can directly import that into the Winman, and the P&L balance sheet is updated in the Winman. Right? So you will be ready for just a review, and then available with the balance sheet P&L updated in the software for filing of the return. Oh shit. So thank you, Parin. Hello. Yeah, Near audible? Yes, audible. Yeah. So this is a very good feature to update the details in the ITR. Same balance sheet, P&L, manufacturing account, you will be able to update. They have given a couple of sheets at the end, blank sheets, where you may require to have some of your notes or update the things. And yeah, that's it. One more thing which I would like to tell is key for the first year, if you are going through it, you like for March 24, then you will have to first update as a March 23 figures here, and then it's on a click that will be shifted to the next year. So here there is a tab, move current year to previous year. And if I click on this, yes. So all my 24 amounts, which I had filled up right now here, have been moved to 23 here. And this grouping remains. So if you are importing currently from Tally for 24, all these groupings and the ledger names will automatically be done. Only thing is, maybe the new ledgers which you may have created it during the year, you may have to complete the grouping for that purposes. Right? Same format on a lighter side with the non-corporate, as there are no major restrictions out there. I'll just open the utility so everyone can see it. Same trial balance. Here they have provided FAR as per income tax as non-corporate. Accounting standard sheet. This is the new feature which they have added currently for this year. Here there is only QDIS because there are no regulatory disclosures, so RDISC is not there. But the QDIS concept is the same. Partners capital account. So I can select here partnership, individual, and LLP. So if I select individual, the partners capital account is here. Again, the checks sheet, balance sheet, P&L, policies, notes, and all other sheets remain the same. Yes.
Any questions? I would be happy to answer. Thank you. Over to you, Niyar. Thank you, Pareen. I think quite an insightful session and timely thing because the audit season is over the head. We'll take up few queries. So I think Monish has put up whether import from Tally option is available for Black Horse. Yes, import from Tally is there. Okay. So the trial balance which I imported was from Tally only. So it was open out here. So I guess his query is direct import, auto import from Tally option is available, or whether you need to download it manually and then. No. You just have to click import from Tally. Only thing is that you have to connect the ODBC and this Tally port number should be same. The Tally which is open and the Tally port number which is there in the open Tally. I'll just show it once again. Help, settings, connectivity. So here it is showing both yes, and this is the port number 9000. Okay, understood. So this is the same thing which I have to configure out here. I can put manually any number. If you put 9999 and update 9999 in Tally, it will get connected. Understood. And then you have to just click on the import. Perfect. I think one question from Vinith was whether notes having nil value can be eliminated. And I guess you already mentioned that during your session that there are options to eliminate some of the nil things. Correct. Yeah. Any other questions from the members? So, yeah, I think Bhavya Savlas, once any line is eliminated, can it be re-brought up? It can be re-brought up, but only thing is what I would suggest is because see here, it captures if something is blank, it will give you an error. So that will be a difficult task if you eliminate the full line item. So better to follow the standard procedure, and whatever, if you want to add something, then you may go at the bottom. If you want to eliminate, just make the amount 0. It will not be captured anywhere. Perfect. So with this, we are at the end of the session. A couple of announcements that we would like to make before I present the well-deserved vote of thanks. Firstly, as Karan had mentioned, these are all practical demonstrations of the techniques that are used by our members in trying to get ease in the day-to-day work that we do. If any members has any ideas or suggestions in terms of whatever they are using and would like to share it with the other members, you can reach out to any of us from the managing committee or the practice management and development committee, and we would be more happy to give you the platform to demonstrate any of the your ideas that you are regularly using. Apart from that, we would also be very soon circulating a Google form collate some very critical and important information that is relevant to our day-to-day practice, and with that that would help us organize more relevant programs and sessions in the upcoming months. With this, I would like to present the well-deserved vote of thanks. Today's session, you would all agree that has been a very wonderful session. Speakers have really taken us through, nitty-gritties of actual things that a lot of the members do in day out. And I think the credit surely, first of all, goes to the president and the chairman of the committee for coming up with this wonderful idea of having a committee like this, which can really address day-to-day problems and challenges for the members in practice, and also for that matter members in industry. So a well-deserved thank you to the president and the chairman. And moving on to the tech backbone of the committee, CA Karan Shah and CA Kunjesh Shah.
They've been the brainchild of the entire structure of the program, and special mention to Karan. I think I could proudly say that he is the convener for today's session, because right from the idea to the structuring to the constant communication with the speakers, guiding them, mentoring them, and probably even today giving them the right platform, opportunity, and even solving all the queries probably live, real-time basis. I think the credit surely goes to Karan for really leading from the front for this entire program, and undoubtedly to our three speakers who have given a live demo: CA Pareen Gala, CA Ankur Sangoi, and Vipra Sayya, who is recently qualified as a chartered accountant. So I think thanks to all of you all for really sharing your insights and giving the practical demo of how members can really ease. We all understand ease of doing business, on a real matrix when we look at the economy and the way business is done. But this is nothing but, ease of doing business for practicing chartered accountants. So I think it's a wonderful demo that you guys have given. And last but not the least, to the entire managing committee and the practice management and development committee, who have really put in the efforts and have contributed in various ways to the successful organization and execution of this event. And frankly, we've actually completed exact on time in 2 hours. We started off at around 4:05, and at 6:05 we are concluding this event. So thanks to all the speakers and the organizing team. And I look forward to more such participation for all the future events from the members. Thank you so much. So we can now conclude the meeting.